Hello student, today we are going to discuss a very important topic, amniocentesis. This topic is left in my videos. So today I explain this topic, amniocentesis. What is amniocentesis and why we do this process? Okay, firstly, amniocentesis is a procedure in which amniotic fluid is removed from the uterus for testing or treatment. Student, in this picture you see that the baby is surrounded by the amniotic fluid. This is the amniotic fluids, and in this amniotic fluid the fetal cell is present. Okay, with the help of this needle guided by ultrasound method. Okay, what happened? This amniotic fluid is removed, and in this amniotic fluid fetal cell is present. Here, amniotic fluids is the fluid that surrounded and protect a baby during pregnancy. This fluid contains fetal cell and various proteins. Student, it is used to test for presence of certain genetic disorders such as Down syndromes, hemophilia and certain muscular dystrophy. Actually, एमनियोसिंथेसिस की प्रोसेस बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए की जाती है. ओके, अगर किसी बेबी में मे बी अगर प्रेगनेंसी 30 इयर्स और आफ्टर 35 इयर्स है तो मे बी कि बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं. उन जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. इस प्रोसेस में एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, लिया जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड्स में फीटल सेल्स होती हैं जिसकी स्टडी की जाती है. Okay, here you see it is used to help determine survivability of fetal. The test is usually done 14 to 18 week of gestation. All gross chromosomal abnormality, student mark it, chromosomal abnormality over 50 biochemical defect can be through this process. Okay, this test is used for find out the genetic disorder of the baby. Okay, and it also reveals the baby gender. So amniocentesis का मिसयूज भी हो जाता है बेबी जेंडर को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, it is also reveal the baby gender, which is important informations for diagnosis of sex linked disorder. Okay, in which an abnormal genes carried by the mother affect her male offspring only. ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर एमनियोसिंथेसिस में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम बेबी के जेंडर को भी पता लगा सकते हैं. तो एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस का जो डिसऑर्डर हो जाता सॉरी एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस का जो मिसयूज होता है वो होता है टू फाइंड आउट द जेंडर ऑफ द बेबी, द फीटस. ओके, एंड इट लीड टू द फीमेल फीटिसाइड्स. मेनली एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस. अगर फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है लाइक डाउन सिंड्रोम्स, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया. ओके, ड्यूरिंग एमनियोसिंथेसिस the position of a fetus and placenta is first identified using ultrasound. Here you see student, on guided of ultrasound a needle removed amniotic fluids. In this amniotic fluid, fetal cell is present to examine the genetic disorder. Okay, and after the skin prepared with the antiseptic and a local anesthetic is given, a hypodermic needle is inserted through the mother abdominal wall and into the amniotic cavity within the uterus. And a student, 30 to 40 ml of the fluid are suspended and suspended cell are aspirated for microscopic examination. That means 30 से 40 ml फ्लूइड्स को रिमूव किया जाता है, लिया जाता है. ओके, here you see with the help of this needles the fluid is removed out
for the study of chromosomes. Student, chromosomal studies which required in the cell for 2 to 4 week culture medium may reveal rearrange missing or extra chromosomes. Actually, in this process, what we do, we find out the genetic disorder in fetus with the help of amniotic fluid, because amniotic fluid have fetal cell to study in these fetal, with the help of these fetal cell, chromosomal study is done. After the chromosomal study, the doctor find out that any genetic disorder is there or not. Okay, I hope you understand this process. This is all for today.